हेलो एवरीवन। आई होप एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा सबका। एंड हिस्ट्री सेक्शन में आई हैव सीन द पेपर एंड यस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इस साल पूछे गए हैं, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज रिड्यूस्ड, यू कैन से। टोटल 11 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री सेक्शन। यूजुअली इट कम्स टू बी यूजुअली जो पूछे जाता है इट्स अराउंड 16 to 20 की रेंज में वी गेट द क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, बट दिस ईयर हिस्ट्री एंड कल्चर को मिला के इट्स टोटल 11 क्वेश्चन। और उसमें डोमिनेट क्या कर रहा है, इफ आई सी द ट्रेंड ऑफ योर हिस्ट्री सेक्शन, इस 11 क्वेश्चन में से योर 6 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द सेक्शन ऑफ, और आई वुड से 6 का 8 क्वेश्चंस हैं वो एंशियंट एंड मिडाइवल इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर से हैं, जिसमें आर्ट एंड कल्चर एंड रिलीजन को अगर हम सेपरेट करें देन वी हैव 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट 8, 6 क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडिंग रिलीजन है, एंड देन वन प्योर साइड बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एंशियंट से है, एंड वन प्योर क्वेश्चन इज फ्रॉम योर मिडाइवल। अदरवाइज रिलीजन एंड कल्चर का डोमिनेशन हम दिख रहा है, but again that cannot be completed without covering your ancient and medieval. So ancient, medieval and art culture plays a dominant part hai out of 11, total 8 questions. The rest 3 are from modern India. Last year भी 3 ही क्वेश्चन आए थे, इस साल भी 3 क्वेश्चन ही आए हैं फ्रॉम मॉडर्न। तो इफ यू सी रिसेंट ट्रेंड में मॉडर्न इंडिया का जो वेटेज है इन आर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट इज डिक्रीजिंग, एंड द वेटेज ऑफ योर एंशियंट, मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर सेक्शन इज इंक्रीजिंग। लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, इस साल भी द सेम ट्रेंड कंटिन्यू। ओके, this is about the general idea or analysis about the question. About the nature of questions हम डिस्कस करते हुए चलेंगे as we see the questions from your art and culture and your, you can say, history section. Okay, so let's start with our discussion. The first question I am seeing set D के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो सेट डी में जो क्वेश्चन नंबर 11 है वहां से हिस्ट्री सेक्शन स्टार्ट होता है। द क्वेश्चन नंबर 11, इट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट्स अ वेरी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपका हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों जगह ही हम पढ़ते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वी नो दैट द प्रेसिडेंट was Dr. Rajendra Prasad, but before the election of Rajendra Prasad as the president, who was the provisional president? ये पूछा, it's a very factual question, and this the answer, it's an easy one. The answer is Dr. Sachidanand Sinha. Dr. Sachidanand Sinha from Bihar, he was the provincial president of this constituent assembly before election of your Rajendra Prasad. It's an easy one. It is nothing like कि ये question tough category में and all. So the answer will be D for Delhi, and category easy. Next, इसके बाद second question देखते हैं, that is question number 12. Question number 12, if you look, this question we have discussed in our class itself, Government of India Act 1935 डिटेल में डिस्कस किया है, एंड इन दैट वी डेफिनेटली सॉ ऑल द फीचर्स, जिसमें yes, the two prominent features of this Government of India Act, this UPSC has asked as question number 12 in set D. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। यस, इट प्रोवाइडेड, बट उसके साथ साथ क्या कह रहा है, ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस and princely states. Yes, that's correct. We have seen कि 1935 Government of India Act, which was based on the white paper जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, that राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक व्हाइट पेपर 1933 में आता है जिसमें एक मेजर आइडिया जो डिस्कस किया जाता है, दैट इज योर ऑल इंडिया फेडरेशन। And this all India federation was formed actually, what this federation is of, what the federation of British provinces, British Indian provinces and the princely states. So yes, this statement number 2 will be the correct statement, I would say. This statement is a correct one. Then the second statement, यहाँ पे जो फेडरेशन क्रिएट हुई उसके बाद सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में द सब्जेक्ट डिवीजन इज आल्सो देयर। ओके, सो एट 1935 एक्ट में
we'll see कि diarchy at provinces will be removed and diarchy at center will be you can say applied. So diarchy will be brought at center. तो जो सेंटर लेजिस्लेचर है उसके पास क्या सब्जेक्ट्स हैं जो डिवाइड होंगे आपके रिजर्व्ड एंड योर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में. सो दे primarily the central control of federal legislature agar hum dekhen, so this federal legislature controlled defense and foreign affairs. Yes, that is definitely the two major subjects which this federal legislature controlled according to this 1935 act. So again this question will be kept in your easy category because 1935 act is one of those basic aspects which we need to do. जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट चैप्टर हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, वेयर आई स्टार्ट्स फ्रॉम योर 1958 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट टिल योर 1935 एक्ट, और आई वुड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947. तो वहां पे वी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, एंड सो द आंसर विल बी बोथ 1 and 2, that is C. क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, which of the statement given above is or are correct. So the answer will be C, both 1 and okay. So these two questions modern India से हैं, and ये दोनों question I would put in your easy category. Easy category. Then this one, the third one, which comes from art and culture section, that is your literature section. Let's see which one of the following is a work attributed to playwright Bhasha. Bhasha, his work, if you look at it's all these works na yahan pe, yes, I would put this question in medium to tough category, because you cannot remember each and every literature from your ancient and medieval period, or agar pad bhi lete hain then there will be confusion, therefore I'll put this question in your medium to tough category. And bhasha se related jo ye char literatures diye hue hain, I would say the correct answer is C, Madhyam Vyog. But at the same time, can we use any other technique? If I don't know the exact answer, can we use our knowledge to get to the correct answer? I would say to some extent yes, not 100%, but definitely we can eliminate two prominent text from here. दो prominent text यहाँ से आप eliminate कर सकते हो. हाउ यू कैन डू इट? नाट्य शास्त्र, आर्ट एंड कल्चर में हमने पढ़ा है ना, जब हम डांस, म्यूजिक, ड्रामा ये पढ़ रहे थे, तो नाट्य शास्त्र वाज रिटन बाय भरत मुनि, एंड दैट इज रिगार्डेड एज अ वन ऑफ द prominent text of your Indian music, dance and drama. So Natya Shastra was written by Bharat Muni, so that can be eliminated. Then if you see the D, Mahabhashya, Sanskrit grammar के respect में, we have seen two texts in our class. दो टेक्स्ट में से पहला टेक्स्ट था, दैट इज पन्नीज अष्टध्यायी, पन्नीज अष्टध्यायी, एंड विच वाज रिटन अराउंड 5th century BCE, महाजनपद पीरियड में लिखा गया था. और पन्नीज अष्टध्यायी पे जो कमेंट्री लिखी है दैट इज Patanjali, given by Patanjali, that is Mahabhashya, written by Patanjali, that is Mahabhashya. So Mahabhashya was written by Patanjali, we know. Natya Shastra was written by your this Bharat Muni, we know, and therefore we can eliminate these two for sure. So A or C में the answer can be anything. And yes, यहाँ पे because Kavya Alankar was also not a very prominent text as such which we find in your normal standard sources. So this Kavya Alankar was written by actually a person with name Bama, and that is again a very tough one which we don't see as covered in normal standard text, and therefore A or C में confusion होगा, and the correct answer is C. भाषा ने मध्यम वियोग लिखी है, and that is the correct answer, and therefore I will put it in medium to tough. So answer of question number 13 is your C. Okay. Next one, let's see question number 14th. Again we have seen कि बुद्धिज्म, जैनिज्म ये बहुत prominent topics हैं for your civil services preliminary examination. We know this, UPSC repeatedly asked this question, and this year they have went beyond what they have been asking. They said कि okay, we are just focusing on the Buddhism in India.
Now let's see how this Buddhism flourished outside India. Okay, and in that sense, they have asked a question related to a monk who went from India to China during your this 4th century AD, 4th century CE, and they have not asked about during what period he went. Rather they asked which literature he wrote. And that becomes again a question from art and culture section. And the name of that monk is your Sangbhuti. Sangbhuti, he was an Indian Buddhist monk who traveled to China in your 4th century C. 4th century C में इंडिया में कौन रूल कर रहा है? Guptas were ruling. Please remember this. And he was the author of commentary on your Sarvastivada Vinay. So the correct answer over here is Sarvastivada Vinay. I'll again put this question in your tough category because it's not covered in, means it's not generally covered in your standard courses. So the answer is your Sarvastivada Vinay, and your question number 14, Sangbhuti, the category is tough. Okay, so 4 questions we have seen, 2 from your art and culture and 2 from your modern के दोनों ही क्वेश्चन इजी थे, आर्ट एंड कल्चर के दोनों ही क्वेश्चन मीडियम टू टफ कैटेगरी में आए हैं. एंड इफ यू सी both of them are related to your literature. Okay, next one, let's see. Again we have discussed this in क्लास itself कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, एंड अगेन इट्स आर्ट एंड कल्चर प्लस करंट दोनों है, जो आपके कैट मैगजीन में भी, यहाँ इंश्योराइज में जो हम मंथली मैगजीन देते हैं वहां पे भी कवर्ड है दिस थिंग. So and while discussing temples, I have already told you, जब एजुकेशन पढ़ा रहा था तब शांति निकेतन भी डिस्कस किया था हमने क्लास में. एंड व्हेन वी वर डिस्कसिंग योर temples, then we discussed this Hosala temples or Keshav temple, Chinna Keshav temple, Hosaleshwar temple, all of this along with the characteristic feature or architectural features हमने क्लास में डिस्कस किया था. एंड there I told you कि दिस ईयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि which of the following is a UNESCO World Heritage Site, and that is what UPSC has done. UPSC has done, उसने बस ये कर दिया है कि आपको time period based question बना. They have linked it to the time period. So let's see the question. Consider the following properties included in the World Heritage Site released by UNESCO. ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दी हैं? पहला शांति निकेतन इन योर वेस्ट बंगाल. सेकंड रानी की वाव गुजरात में. देन sacred ensembles of your Hosalas, that is the 3 Hosalas temple, the Keshav temple, Chenna Keshav temple and your Hosaleshwar temple. And the 4th one is Mahabodhi temple complex at Bodh Gaya, means Bihar. So in चारों प्रॉपर्टीज को विच इज पार्ट ऑफ योर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसने कहा, फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज वर इंक्लूडेड इन 2023, मींस लास्ट ईयर इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड की गई है. एंड यस, इट्स अ इजी वन इफ यू आर covering your current affairs as well as you are listening to the classroom discussion properly. Then the answer, Santiniketan, yes, September 23. Then second one is your रानी की वाव बहुत पहले बना था, 2014. 2014 में it became the UNESCO World Heritage Site. Sacred Ensembles of Hosalas, yes, 2023 में आपका it became a UNESCO World Heritage Site. And then Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya, that was way back around 2002 में ये आपका UNESCO World Heritage Site बनता है. तो the answer will be 1 and 3, इसका मतलब 2 हो रहे हैं, 4 में से 2. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी, तो मतलब only 1, only 2, only 3, all 4, तो only 2. The answer will be B for Bombay. Your answer will be B for Bombay for question number 15. That is your UNESCO World Heritage Site service. Okay. Now we have discussed 5. Now move to the next question. That is question number 6. Question number 6. With reference to ancient India, Gautam Buddha was generally known by which of the following epithets? If you can recall the classroom discussion,
हमने नायपुट एंड निगंथ नाथपुट, ये जो दोनों नाम हैं, निगंथ नाथपुट एंड नायपुट, ये दोनों एपिथेट हैं आपके वर्धमान महावीर के लिए, वर्धमान महावीर के लिए. ओके, सो दिस one can be eliminated. It is related to Mahavir. Then the second one, Sakya Muni. Buddha belongs from your Sakya clan, therefore he is called as Sakya Muni. The thing which I repeatedly say in class. So this, yes, it is an epithet used for your Gautam Buddha. Then the third, that is Tathagat. Tathagat, yes, that is also an epithet which is used for your Gautam Buddha. तो आंसर विल बी 2 and 3. 1 आपका नहीं होगा. इफ यू सी द ऑप्शंस, आपका 2 and 3. इफ यू से कि 1 नहीं होगा एंड 2 होगा, देन ओनली, अगर तद्गत नहीं भी पता है आपको, देन ऑल्सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन इजिली एलिमिनेशन टेक्निक से. तो दिस ईयर एक चीज और देखिए कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस में यू कैन यूज दिस एलिमिनेशन टेक्निक इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, तो यस, जो हमें नॉलेज, हमने क्लास में जो डिस्कशन किया है उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड. से फॉर एग्जांपल यहां पे 1 नहीं है, इफ यू नो दिस, एंड 2 है, then it will be 2 and 3. Otherwise it's a very common one, जो आपका Sakya Muni and Tathagat, both of these are the epithet of your Gautam Buddha. So select the codes. So this question number 34 in set D, the answer will be again Bombay. B for Bombay, 2 and 3. 2 and 3. Now let's the next question. This again we have discussed in class. और यहाँ पे क्लास के डिस्कशन एंड एलिमिनेशन टेक्निक, इन दोनों चीजों को यूज करो, यू कैन इजीली गेट टू द आंसर. तो सॉल्विंग द प्रीलिम्स क्वेश्चन इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, रादर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. ये भी ध्यान रखना, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर नॉलेज, रादर एप्लीकेशन, कि कैसे आप उस चीज को अप्लाई कर रहे हो इन दोज 2 आवर्स. और उसमें एक एलिमिनेशन टेक्निक बहुत, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक which you can utilize in your prelims examination. And यहाँ पे भी कर सकते हैं. Chandraketugarh we have discussed. Chandraketugarh, when we were discussing your this terracotta art form, Chandraketugarh, UPSC has previous year में एक बार पूछ चुका है. Chandraketugarh is a center of terracotta art, present West Bengal, present day West Bengal में located है. Otherwise also जब उत्तर पथ डिस्कस कर रहे थे, तो उत्तर पथ में I have told you कि it started from your Pushya Kalavati, or you can say Gandhar region, Takshila region, and went through Chandraketugarh till your Tamralipti. We have discussed this in class. तो Chandraketugarh अगेन ओडिशा में नहीं होगा. तम्रलिप्ति तो आपका वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल का पोर्ट है. तो नॉर्थ में चंद्रकेतुगढ़ उसके नॉर्थ में है, एंड देन इट फ्रॉम चंद्रकेतुगढ़ दिस उत्तर पथ कनेक्ट्स टू योर दिस तम्रलिप्ति. सो इन बोथ दीज केसेस चंद्रकेतुगढ़ इज नॉट इन ओडिशा, दैट इज कन्फर्म. हमने क्लास में ये डिस्कस किया है. तो चंद्रकेतुगढ़ इज इन वेस्ट बंगाल, तो यही पॉइंट इट विल बी, यू कैन से इट विल बी wrong match. It is not correctly matched. Then Inamgaon we have discussed. महाराष्ट्र में जब हम डिस्कस कर रहे थे चालकोलिथिक कल्चर्स, तो चालकोलिथिक कल्चर्स में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट साइट ऑफ दिस चालकोलिथिक कल्चर इज इनामगांव. तो इनामगांव, महाराष्ट्र, चालकोलिथिक, ये तीनों जो सेट्स हैं, दे आर करेक्टली मैच्ड. तो यस, दिस पॉइंट नंबर 2 इज करेक्ट. If you see 1 is wrong, point number 2, because Mangadu and Salihunnam, yes, these are very unique points, means they are not covered generally they are not covered, but without knowing them also you can get to the correct answer. Chandraketugarh, yes, UPSC has already asked. Inamgaon, UPSC has already asked, and we have elaborately discussed in class. So in दोनों का भी अगर हमें पता है, then we can get to the answer. Which of the following above rows is given information correctly matched? तो चंद्रकेतुगढ़ गलत हो गया, 1 गलत है, 1 नहीं होगा, मतलब A and D can be easily eliminated. So the answer will be B or C. B 2 कहां पे है? 2, we know कि 2 is correct. So B is 2 and 3 and C is 3 and 4. So it means कि 2 तो है ही, we know this, 2 is there. So Inamgaon, Maharashtra and Chalkolithic site is correct. और उसी बेसिस पे we can just mark the correct answer is again Bombay.
Bombay, B, 2 and 3. Okay, that is the case with respect to your question number this set D में question number 35 we have. Now let's move to question number 36. Set D, which of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkal? And it is Krishnadev Rai. Krishnadev Rai, he gave the permission. So the correct answer will be A. A will be the correct answer for question number 36. I'll put this question in your medium category, question number 36. तो question number 5, this 35 है, उसे मैं easy to medium category में रखूंगा because some names are not usual names, therefore medium. Otherwise तो ये easy category में होना चाहिए, but you need to apply your elimination in getting to the right answer, solving this question. Okay. Then question number 36 we have seen. Question number 37. 37 again a question from modern India. इससे पहले सिर्फ ancient, medieval and art and culture चल रहा था. Let's see modern. 37 में क्या पूछा है? With reference to revenue collection by Cornwallis. Please remember ये सिर्फ revenue system के बारे में नहीं पूछ रहा है. It is asking for revenue collection by Cornwallis. उस period की बात कर रहा है. Okay, early phase of the British rule in India. Consider the following statement. Under the Rayyatwari settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. That won't be correct because एक तो सबसे पहली बात की it is talking about Cornwallis. Lord Cornwallis के respect में Rayyatwari settlement won't be there. Okay. Otherwise also this exemption of from revenue payment in case of bad harvest and or natural calamities, that's not completely true. Although एक clause है जहां पे हम later period में देखेंगे. It's not about Cornwallis and therefore this word Cornwallis becomes important because हम later period में जब गांधी का खेड़ा सत्याग्रह होगा तो खेड़ा सत्याग्रह में गांधी ने ही सत्याग्रह सपोर्ट किया था because through inquiry he found that the law says or the revenue code says कि 1/4 of the total produce से अगर कम produce हो रहा है then the revenue or then the peasants will be exempted from your revenue charge and this revenue payment. But ये क्योंकि Cornwallis के period से है, so this will be wrong, completely wrong. So statement 1 is wrong. Statement 2, under the permanent settlement in Bengal, if the zamindar failed to pay his revenues to the state, okay, on or before the fixed date, he would be removed from his zamindari. Yes, that will be done. Because his zamindari can be auctioned, can be sold to the other zamindars, and yes, that also took place. So because of this clause only we say that the land rights, the private property concept which was applied to these zamindars or the land rights given to these zamindars was not an absolute land right, rather it was a misnomer. Misnomer means a state has this absolute right who can sell their property if they fail to give the revenue on the stipulated. Okay, so 2 will be the correct one. Which of the statement given above is or are correct? So answer again will be Bombay. Question 37, answer Bombay, that is 2 only. Next one is question 38. Again I will put this question in tough category because एक तो literature में है and literature में भी it's the first point, parables, the term parables can create problem for most. And so parables are nothing but the stories with certain teachings. उन्हें हम parables बोलते हैं. तो Upanishads have parables or not? Yes, it has parables. हैं parables. Then second one, Upanishads were composed earlier than Puranas. This is true because you can see Upanishad का origin कब हो रहा है? Later Vedic period में 6th century BCE. So Upanishads belong to and its composition, not compilation. Composition जो है इसका वो आपका महाजनपद period, that is 6th century और later Vedic का जो बिल्कुल end phase है वहां start हो जाता. Okay, and जो हमारा पुराणास है, पुराणास is related to your Hinduism and Hinduism को हम we also call this पुराणिक Hinduism. तो जो हमारा पुराणिक हिंदुइज्म है उसका अगर हम इवॉल्व्ड
जो पार्ट देख रहे हैं वो फ्रॉम पोस्ट मॉडर्न पीरियड होता है. So from that period we find Puranas and all. So this Upanishads are definitely the literature which were composed earlier than the Puranas. तो ये सही होगा. 2 will be correct, 1 will be wrong. No parables in Upanishad will be wrong. 2 will be correct. So again the answer will be Bombay. Bombay B. B 38 का Bombay. Then next one you have one question, which one of the following was the latest? Again in the class itself last lecture में बोला था intangible cultural heritage sites ये आपको पढ़ना है. And the list you need to see again. ये it is current based because इसने यही पूछ दिया है कि which of the following is latest inclusion जो है तो 2023 में जो include किया गया है, it was asking about that गरबा. 2023 लास्ट ईयर ही इंक्लूड किया गया था. गरबा डांस बिकेम a part of your intangible cultural heritage site and or list, you can say cultural heritage list में पार्ट बना था गरबा 2023. उससे पहले हमारा दुर्गा पूजा है 2021 का, उससे पहले कुंभ मेला 2017 है एंड छाऊ उससे भी पहले 2013 if I recall it clearly. So the answer will be गरबा, that is C. The correct answer is C for Calcutta for question number 40 set D. Which of the following was the latest inclusion in the intangible cultural heritage list of UNESCO? You can see कि दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स और दोनों ही यूनेस्को, एक तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से आ गया और दूसरा इंटेंजिबल. Okay, so I would put this section of your history and culture in this year's paper to, I would say, मीडियम कैटेगरी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इजी की कैटेगरी में हैं, स्पेशली जो करंट अफेयर्स से आए हैं या मॉडर्न इंडिया से आए हैं. कुछ क्वेश्चंस जो लिटरेचर बेस्ड हैं दे आर काइंड ऑफ टफ इन कैटेगरी. सो आई विल पुट दिस होल सेक्शन इन योर मीडियम कैटेगरी. ओके, विद दिस आई होप दैट आपका एग्जाम अच्छा गया हो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट. विल मीट सून फॉर आवर मेंस प्रिपरेशन. Thank you.